Good morning, students. This is kinetic theory of gases lecture number 2, and today we are going to do extraordinarily important derivation, that is, what is the formula for pressure exerted by a gas. In this classroom there is air 78%, nitrogen 21%, oxygen, and remaining 1% carbon dioxide, water vapor, other inert gases. So it is compulsory for us to know what is the pressure exerted by air on our body. Pure nitrogen, then nitrogen on our body. Oxygen, then oxygen on our body. So today we are going to do one very important derivation. Mind you, I told you in the past also, this book is 12 standard heat chapters. That means the derivation which we are going to do today is going to be very important, even board exam point of view. Because in board exam, this derivation comes. It is one of the favorite derivations of this syllabus by the examiner. Yes, sir? Now before we start, let us just quickly recall what we did in the previous class. We did Boyle's law. What is Boyle's law? Pressure 1, volume 1 is equal to pressure 2, volume 2. Pressure is inversely proportional to volume. What is Charles' law? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. Pressure kept constant. P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. Volume kept constant. And over here the temperature has to be compulsorily in degree Kelvin. Right? Ideal gas equation is PV is equal to nRT, where N के दो मतलब थे. One was mass of the gas upon molecular weight, other was number of molecules upon aerodynamics. So taking help of fifth equation, substituting in fourth, we can get 8 different styles of writing ideal gas equation. Right? For example, P is equal to rho chota r bada T. Chota r is P by rho T. Right? So that also is ideal gas equation only, but written in a different manner. Right? Now today we are starting with first article, assumptions of kinetic theory of gases. That means what are postulates, what hypothetical concept we should take help of so that we can understand kinetic theory of gases nicely. The first assumption says that a gas consists of large number of tiny particles, very tiny particles, and they are known as molecules. A gas is consisting of large number of tiny particles which are identical in all respects, and they are known as molecules. So now I will take each and every point one by one. There are around 11 postulates written in your book. In the board exam, they will ask you any 4. Write any 4. So it is very easy to remember. You just have to ask yourself, who are they? How are they? What are they? What is the volume? What is the kinetic energy? What is the potential? How do they move? ऐसा 3-4 क्वेश्चन रखने का दिमाग में, and you can easily remember that. I want all of you to be on page number 4 of your book. Check the title, Assumptions of Kinetic Theory of Gases. Read the very first point. Read the very first point. Is it that a gas is consisting of very large number of extremely small particles? They are known as molecules. Yes or no? Next, the gas molecules are perfectly rigid and elastic spheres. Rigid का मतलब you cannot change their shape and size. Best example is जब आप snooker का game खेलते हो या तो आप कैरम खेलते हो, right? When you strike the coin with the help of a striker, right? The coins, the white coins, the black coins, and the queen, they collide with each other. When they collide with each other, do they undergo change of size and shape? No. That is called rigid. That is called rigid. If I apply tremendous amount of force on this handle, tremendous amount of force, can I change the size and shape of this? No. But suppose this was wax, this was a candle, and if I apply pressure on this, will I be able to change the size and shape? Right? So when the size and shape cannot be changed on application of any amount of force, the body is said to be rigid. The body is said to be rigid. However, perfectly nothing is rigid, mind you. Earth, such a huge sphere, mass of the Earth is 6 into 10 to 24 kilogram. Because of the rotational motion, Earth also is not able to maintain its spherical shape. It is outbulging at the equator, flattened at the poles.
राइट। ये वॉल कितना भी हार्ड है, मैं इसको हाथ से डिफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, बट आई कैन पास अ बुलडोजर ओवर टू इट and bloody deform, I can break it also. That means you can always have a superior machine with the help of which you can change the size and shape. Right? That's the reason we have to say that these are the assumptions. So, gas molecules are believed to be perfectly elastic rigid spheres. जैसे जैसे पॉइंट करते जाता हूँ बेटा एक एक टिक करते जाओ, राइट। और बाय चांस कोई वर्ड नहीं समझा तो पूछो। रिजिड वर्ड का मतलब समझा? If you want to write down the meaning of this, at the bottom you can write. A rigid body is the one. A rigid body is the one which cannot be deformed on. Which cannot be deformed on. Application of any amount of force. Application of any amount of force. A rigid body is the one which cannot be deformed on application of any amount of force. Rigid body word समझा? So they are perfectly elastic. They are perfectly elastic rigid spheres. Right? Please go through the second point. Please go through the second point. Sir, Yeah. they are rigid, then how can it be elastic? Sorry? If they are rigid, then how can it be elastic? इलास्टिक वर्ड का मतलब बेटा ये नहीं होता है कि दे कैन बी डिफॉर्म। हम लोग जो डे टू डे लाइफ में समझते हैं ना, इलास्टिक वर्ड का मतलब ये होता है कि द बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिगेन द ओरिजिनल साइज एंड शेप। अब जैसे मैंने बॉल पेन का स्प्रिंग लिया, बॉल पेन का, और मैंने उसको डिफॉर्म किया, तो मैं बहुत इजीली डिफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। लेकिन जैसे मैंने अपना फोर्स रिमूव किया, बॉल स्प्रिंग वापस आया, राइट। दैट मीन्स द स्प्रिंग कम्स बैक बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक नेचर। Greater the capability of coming back to original, better the elasticity. अब यही बॉल पेन की स्प्रिंग के बदले मैंने बाइक का स्प्रिंग लिया और इसको डिफॉर्म करना चाहा, I will need tremendous amount of force. So the body which gets deformed less is more elastic. आप लोग अगर ये सोचते हो ना कि रबर बैंड एकदम इजीली खींचते हैं तो वो ज्यादा इलास्टिक है, राइट। इनफैक्ट इट इज बैड इलास्टिक। In fact, it is bad elastic. The one which gets deformed less is more elastic. Reason? It offers greater opposition. एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ बेटा। ये 3 स्टूडेंट का संडे को एग्जाम है, राइट। अभी मैंने इनको एक ऑफर दिया कि बेटा संडे का एग्जाम मत लिखो, चलो मैं तुम लोगों को एसएल वर्ल्ड का पिकनिक ऑफर करता हूँ, सारा खर्चा मेरा। ये खुशी खुशी हाँ बोल देता है। That means mentally very weak person. Reason? He wants to enjoy life at the cost of exam. मैंने तो इसको टेम्पटेशन दिया था, इजीली पढ़ गया। ये बोलता है नहीं सर, एग्जाम फर्स्ट। एग्जाम और क्या, पिकनिक तो लाइफ टाइम कर सकते हो। थैंक्स फॉर योर ऑफर सर, बट आई डोंट वांट टू टेक इट। मतलब ही इज वेरी फर्म। अभी मैं इसको ऑफर करता हूँ, अरे डोंट वरी अबाउट द मार्क्स सर, आई विल काउंट द मार्क्स ऑल्सो, तो घर पे पेपर लिखना। नो नो सर, फिर भी एग्जाम इज एग्जाम। ओके नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज ऑल्सो। नो सर, फिर भी एग्जाम इज एग्जाम। ओके आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज। अभी अंदर से सोच रहा है, देखते और कितना ऑफर कर रहे हैं, बाद में हाँ बोलेंगे। बोलते नो सर, एग्जाम इज एग्जाम। बोले ओके गिव एग्जाम। नो सर, आई थिंक आई टेक अप योर ऑफर, राइट। अब ये बोलता है, दोनों का केस सुन लिया ना इसने, सर आप मुझे 10 करोड़ भी ऑफर करोगे ना तो भी मैं एग्जाम लिखूंगा, आई विल नॉट गो टू एसएल वर्ल्ड ऑल्सो। Means very firm, very firm. So perfectly rigid, right? Not giving up by the application of deforming force. Second example, ये तीनों ने होमवर्क नहीं किया, तीनों पे चिल्लाता हूँ मैं, राइट। अभी इस पे चिल्लाया ही नहीं, रोना शुरू कर, इमोशनल, वेरी इमोशनल। मतलब अभी तो मैंने चिल्लाना शुरू ही नहीं किया और इसने रोना शुरू कर दिया। That means very weak. I could make him cry very easily deformed. So not rigid, right? इसको हालांकि शर्म आ रही है तो होमवर्क नहीं किया, ऊपर से हंसता है। अब ये रोना शुरू हुआ, मतलब मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ा। इसको मारा तो ये हुआ,
इधर मारा सर, इधर भी मारा. Perfectly rigid. Mentally very strong. Very difficult for me to make him cry. Right? So a rigid body is the one which does not give up easily. Is that clear? And perfectly elastic body means rigid body. Because perfectly elastic body develops such a strong internal force that you cannot deform it. Right? That is the meaning of second point. They are perfectly rigid elastic spheres. They are perfectly rigid elastic spheres. Second point, समझा बेटा? Third point. They are saying the volume of all the gas molecules. Apply common sense. Gas molecules are very tiny. Very, very tiny. The mass of the gas molecule is in the range of about 10 to minus 27, 10 to minus 26, 10 to minus 25 kilogram. So if you gather all the molecules of this classroom and get them at one place, the volume will be hardly maybe the tip of this pen. Now in comparison with the volume of the entire classroom, can I say this volume is negligibly small? Yes. So we say that volume of all the gas molecules, is very, very small compared to the volume of the vessel or volume of the container. Third point समझा बेटा? Forget about molecules. Let us take our volume, including mine, including chair, including projector, including fan, whatever. Can I say if we combine all these volumes and if we go for the total, that volume is still smaller than the volume of this classroom? Yes. तो हम लोग जब इतने साइज के हैं और हमारा वॉल्यूम क्लासरूम की कंपैरिजन में कम है, तो हम लोग तो गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. आई एम 100 किलोग्राम. आई एम टॉकिंग अबाउट समवन हु इज 10 to minus 27 किलोग्राम. So it's very, very, very small. राइट? अगर ये कंटेनर मैंने एकदम छोटा भी लिया ना, बॉटल की साइज का, तो भी उसकी कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी, वेरी स्मॉल. थर्ड पॉइंट समझा? फोर्थ पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर वेरी, वेरी स्मॉल, they neither attract each other nor repel each other. Apply common sense. Are we attracted by Earth's gravitational field? Yes. Because Earth ka mass is much, much, much bigger than us. Gravity of a massive body is defined as G capital M upon capital R square. Earth का mass बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत. That's why we feel the gravity. अपना मास सामने अराउंड 100 kg के आसपास, वेरी, वेरी, वेरी स्मॉल. तो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड एकदम कम है. मैं तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो सोचो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड तो ना के बराबर है. एंड दैट्स व्हाई वी से दैट दे डोंट इन्फ्लुएंस अदर्स, दे डोंट इन्फ्लुएंस ईच अदर. द गैस मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर, एंड इफ दैट इज द केस, दैट मींस द पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड. दैट मींस the potential energy is not affected. मैं क्लासरूम की विंडो के बाहर खड़ा हूँ, राइट? और ये मैं ये लेवल पे चल रहा हूँ ना, वो विंडो ओपन है, वही लेवल पे मैं चलते जाता हूँ, तो क्या मैं हवा में चलूंगा? सीधा नीचे गिर जाऊंगा. रीजन, आई एम हैवी. Earth is very, very heavy, so I am influenced by Earth's gravitational field, right? But what if I fire a bullet? Will it go straight? Yes. एक तो बुलेट लाइट वेट है, राइट? दूसरा, it is going with tremendous velocity. That means it can easily neglect the effect of gravity. Then it will shoot the target. But suppose target आया ही नहीं बीच में, then it will follow in a parabolic path. It will fall to the earth in a parabolic path. Because बीच में कोई target आया ही नहीं. So its kinetic energy was decreasing. Then it became so less that now it could not challenge the gravitational force. So it falls down. Yes or no? Fourth point समझा बेटा? चेक करो. Thereafter we say that the gas molecules are identical in all respects. मतलब अगर मैं प्योर ऑक्सीजन ले रहा हूँ और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 52.8 into 10 to minus 27 किलोग्राम है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का मास से, इट इज समथिंग लाइक योर ब्लड ग्रुप. आपकी बॉडी के कोई भी पार्ट से ब्लड निकाले, तो जो ब्लड ग्रुप है वो थ्रू आउट द बॉडी सेम ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा इधर O नेगेटिव, इधर O पॉजिटिव, इधर AB नेगेटिव. नो, it will be the same blood group. Yes or no? That means if you take one particular gas, then the molecules will be identical in all possible respects. Check the fifth point. Thereafter, these gas molecules move in a random manner, haphazard manner.
Look at the coins of carom board. Look at the coins of carom board. Right? Suppose this is bunch of coins and this is the striker. And if I strike this, can I say the coins will move in a haphazard way? Yes. But when one coin moves from one location to the other location, can I say that path taken is a straight line? Yes. Suppose it is going from A to B. Is it a straight line? Yes. Then it is going from B to C. Is it some other new straight line? Yes. Then suppose it collides with the wall of the carom board and it changes its path. It is going from C to D. Is it another straight line? Yes. Then it is going from D to E. Is it another straight line? Yes or no? That means it goes from one place to the other place. That happens in a straight line path. This straight line path taken by the molecule is known as free path. Is known as free path. And the average of all these free paths is known as average free path, or otherwise the better word is mean free path. Mean का मतलब होता है average. What do I mean by this? Suppose AB distance was 4 cm, BC was 3 cm, CD was 5 cm, and DE was 7 cm. Then 4 plus 3, 7 plus 7, 14 plus 5, 19 upon 4 will be my answer. 19 upon 4 will be my answer. That is the average path or mean free path. Check. 7th point. Check 11th point. Also, check 7th point and 11th point. Free path, mean free path and zigzag movement. अब ये जो zigzag movement है ना, in the field of physics sometimes it is called Brownian motion. There was a botanist, Robert Brown, and he studied the movement of pollen grains under microscope, and that particular movement was like this. He studied pollen grains, how the pollen grains move, right, under microscope. They were moving like coins of carom board. They were moving like the billiard balls, pool game. They were moving from one place to the other place in a random manner. But when it goes from one place to the other place, it cannot go in a zigzag way. It will go in a straight line path. Right? So that is called free path. And the average of all these free paths is known as mean free path. The average of all these free paths is known as mean free path. So I want you to read 7th point and 11th point. 11th point में एकदम लास्ट पैराग्राफ मत पढ़ना, खाली फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ. Thereafter, the theory says that when the gas molecules collide with each other and collide with the walls of the container, the collisions are perfectly elastic. अब ये perfectly elastic का मतलब समझो. Perfectly elastic का मतलब समझो. Everybody here. There is a chapter called work, power, energy and collisions. मैं ही लेने वाला हूँ. So there these examples are going to come, but I am just speaking of collision part from there. There is suppose absolute straight line path. This is one billiard ball, mass is m1. This is another billiard ball, mass is m2. This is going with velocity u1. This is going with velocity u2. Suppose u1 is 10 meters per second and suppose u2 is 5 meters per second. That means u1 has to be greater than u2 because then only collision will take place. आप ये values उल्टा कर दो. Collision will not take place only because they are going in the same direction and this ball is going faster. So it will keep chasing it, but it won't be able to make it. Right? At some point of time, they will just come in contact with each other and they will separate and they will go with new velocities. Say V1 and V2. Say V1 and V2. Perfectly elastic collision का मतलब होता है law of conservation of momentum will work. Law of conservation of momentum will work according to which m1 into u1 plus m2 into u2 will be m1 into v1 plus m2 into v2. Have you heard about this? Yes. Mass into velocity of body number 1 plus mass into velocity of body number 2. This is called momentum before collision. Mass into velocity of body number 1 and mass into velocity of body number 2
after collision, this is called momentum after collision. So this is called law of conservation of momentum. Right? If suppose kinetic energy also is conserved, right, then it is said to be perfectly elastic collision. Then it is said to be perfectly elastic collision. Means what? Half m1 u1 square plus half m2 u2 square also should match with half m1 v1 square plus half m2 v2 square. What are different types? Try to understand. What is the difference between elastic and inelastic? Elastic. These two bodies move. After collision, they separate. Right? इसका velocity 10 है, इसका velocity 5 है. दोनों balls का mass same है. Right? टकराने के बाद इसका velocity 5 हो जाएगा, उसका velocity 10 हो जाएगा. अगर दोनों masses same है तो, हाँ, not otherwise. There are two billiard balls, or there are 2 points of a carom board. Before collision, the speeds were 10 and 5. After collision, the speeds are 5 and 10. Right? So momentum is conserved and kinetic energy also will be conserved. क्योंकि बॉल का मास तो सेम ही है. Yes or no? Inelastic का मतलब इसका वेलोसिटी 10, इसका वेलोसिटी 5, लेकिन ये दोनों बॉल का मास सेम नहीं है. तो इसका वेलोसिटी 7, इसका वेलोसिटी 3.2. Momentum will be conserved, but kinetic energy will be lost. ये बॉडी दूसरी बॉडी को टकराया, साउंड सुना मैंने. That means some part of energy is lost in the surrounding as sound. ये बॉडी इसको टकराया, सपोज मुझे स्पार्क्स दिखे, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराया, स्पार्क्स, that means heat energy. Some unseen form of energy, electromagnetic energy. Now think about these possibilities. A car colliding with car. Activa collided by truck. Truck collided by Activa. Truck collided by Activa. Height भी तो ज़्यादा होता है ना truck का. Are you getting this? So when there is loss in kinetic energy, then it is called inelastic collision. And when there is no loss in kinetic energy, it is called perfectly elastic. Very, very important mathematical concept. When two bodies physically come in contact with each other, or even if they don't come, but if momentum before is momentum after, and if kinetic energy before is kinetic energy after, then such collisions are called perfectly elastic. कोई भी टाइप का collision हो, कोई भी टाइप का, mind you are going to study this in future. Law of conservation of momentum always works. Law of conservation of momentum always works. So to understand this, you are going to study 2 points together, 8 and 11. 8 में it is law of conservation of kinetic energy, and 11th में it is law of conservation of momentum. 8 में printing mistake है, squares print नहीं हुए, squares होने चाहिए, ना. Kinetic energy is half mv square. So वहाँ पे print हुआ है half m1 u1 plus half m2 u2, which is wrong. It should be half m1 u1 square plus half m2 u2 square is half m1 v1 square plus half m2 v2 square. So I want you to read 8th point and 11th point together. 8th point and 11th point together. So what is the meaning of perfectly elastic collision? Understood? Yes. Momentum before collision is momentum after collision, and kinetic energy before collision is kinetic energy after collision. Next one. Now before understanding the next one practical life example. Bowler is bowling the ball. Batsman is going to hit the ball. Right? The ball will take some time to travel from the bowler to the batsman. Right? Now when the batsman is hitting the ball, can I say the ball is in contact with the bat for fraction of a second only? Yes. So can we say time for which the ball is in contact with the bat is very, very small compared to the time taken by the ball to travel from the bowler to the batsman? Likewise, when two molecules collide with each other,
the time for which they are in contact with each other should be very, very small compared to the time taken by one molecule to travel from one place to the other. Yes or no? So time of impact means time for which they were just in contact with each other. Time of impact is very small compared to time taken by the molecule to travel from one location to the other location. Which is easy way of understanding this. Time for which the ball is in contact with the leg of the footballer is very small compared to the time taken by the football to travel from one sports person to the other sports person. Samjha? Yes. Sure. Read the 9th point, please. So time of impact is very small compared to time to travel. एक कॉमन सेंस अप्लाई करो, ये क्लासरूम में गैस मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होंगे ऑब्वियसली बिकॉज वी ब्रीथ इन एयर इज 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन. What if I switch off the ACs? Right now suppose the temperature is 24, the temperature will become 25, 26, 27, 28. Suppose the surrounding temperature is 32. What do you think, the gas molecules will be move faster or slower? Faster. Perfect. Because anyways they were moving. Now on top of that they get extra support of heat energy and therefore they will move more vigorously, more violently. So we say that kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. Temperature double, kinetic energy double. Temperature 5 times, kinetic energy 5 times. And mind you, we are going to prove this officially as a derivation. Please check page number, I think 16, not sure. I think 16. 17. उसमें मिडल में जो टाइटल प्रिंट हुआ है वो पढ़ो. To prove that average kinetic energy per mole of a perfect gas is 3/2 RT. 3/2 is a number. R is universal gas constant, so that also is a number. But temperature is variable. तो temperature बढ़ेगा तो kinetic energy बढ़ेगा. Is it given on page number 17? मतलब we are officially going to prove this. We are officially going to prove this. Read 10th point. Read 10th point. Check please. 11th point में I have already explained you what is the meaning of free path. Okay, I have already explained you mean free path also. Turn the page. Are you on page number 6? Check the topmost diagram. Do you see that the molecules are moving from A to B, B to C, C to D, D to E? तो ये लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4 ये सब क्या है? फ्री पाथ्स. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट लैम्बडा बार का मतलब होता है मीन का मतलब होता है एवरेज. इफ यू वांट टू फाइंड आउट लैम्बडा बार विल इट बी लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा 4 अपॉन 4. या तो आप जितने रीडिंग्स लेते हो उतने. सपोज इसको मैंने लिखा लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा n. Then should I divide it by n? Yes or no? That is the meaning of mean free path. और वहाँ पे डायग्राम के बाजू में बोला होगा कि this motion is called Brownian motion. Yes or no? अभी उसके बाद का वो पूरा पेज छोड़ दो. To be remembered वाला part we will be able to do at the end of the chapter. So to be remembered box में डाल दो और उधर बोलो wait till the end of the chapter.
Are you now on one article called different velocities of molecules of a gas? Listen to this very, very, very carefully. Books band ekdam. Books band. Concept of mean velocity. Concept of mean velocity. Concept of mean velocity. C bar. इसका मतलब होता है mean, average. Concept of mean square velocity. Mean square velocity. So this is written as C bar square. This is mean, this is square. And the short form is MS. Right? Next comes root mean square velocity. Root mean square velocity. The short form is R.M.S. velocity, and it is to be written as. Did you refill this? What did you do? कौन सा पेन है ये? फेंक दो उसको. So this is root mean square velocity. That means this is C bar square का root or C R.M.S. Now very, very, very important definitions, entire physics point of view. Try to understand why. Try to understand why. Suppose, yeah. Okay. Suppose I am taking different gas molecules and their velocities are 4, 5, 3 and 2. So what will be the average of this? 4 plus 5 plus 3 plus 2 upon 4. My answer is 14 upon 4. 7 upon 2. 3.5. Yes or no? Now, is it not possible that C bar is 4 plus 5 plus minus 4 plus minus 5 upon 4? Can the velocity be negative? Definitely yes. Speed cannot be negative. Velocities can be negative. एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, speed is 4 meter per second. एक मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, speed is 4 meter per second, but velocity is minus 4. अभी इसका आंसर 0 आएगा, सोचो. और जैसे ही मैंने ये बोला ना, this is contradiction. This is contradiction. Look at your own statement, what you are saying. The average velocity with which the gas molecules move is 0. One side you are saying they move, other side you are saying the average speed is 0. That means they are at rest. Are you getting this? ये हो सकता है. अब ये problem क्यों आया? It is because of equal and opposite pair of numbers. और ये definitely possible था. So when this kind of things happen, right? The solution to come out of this is इसको square करो, इसको square करो, मतलब ये square हुआ. Common sense apply करो, ये 0 आएगा ही, कभी भी नहीं आएगा. Never, never, never. Because this was the negative numbers which were putting us in trouble. But by doing this, we are inviting a new problem. Reason, ये मेरा आंसर था मीटर पर सेकंड में. अब ये मेरा आंसर हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में. मुझे तो मीटर पर सेकंड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अब इसका रूट ले लूंगा. अब इसका रूट ले लूंगा. So this pronounced as mean square root. That means root mean square velocity. और ये मेरा आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा. This is called statistical analysis. Statistical का मतलब ये होता है कि when you deal with large population of something, molecules, particles, human beings, then algebra does not help. मुझे अपनी कंट्री का पॉपुलेशन निकालना है कि कितना है ना? 140 करोड़, 140 करोड़ बोलने में 140 करोड़. अब एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, कभी भी परफेक्ट फिगर नहीं मिलेगा. Because first of all, such a huge country, so many states.
so many cities, उसमें भी गांव के अंदर गांव के अंदर गांव के अंदर गांव. So you need tremendous manpower to calculate population census. अभी सपोज 1 लाख ऑफिसर्स पूरे इंडिया में पॉपुलेशन सर्वे कर रहे हैं. आपके घर पे कितने लोग हैं? ओके 5 जन, मम्मी पापा, 2 किड्स, ग्रैंडफादर. आपके घर में कितने लोग हैं? 3 जन, मम्मी पापा एंड हिमसेल्फ. ऐसे करते 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 2-3 महीने लगेंगे. बाद में ये 1 लाख ऑफिसर्स जो है वो अपना डेटा देंगे कि मैंने इतना कैलकुलेट किया, मैंने सबको ऐड करेंगे. तब तक पता चला कि इंडिया में 1.5 लाख लोग मर गए और 72,000 और पैदा हुए. बराबर? मतलब वो एग्जैक्ट ट्रैक रखना पॉसिबल ही नहीं. बाद में टोटल करने के बाद फोन करेंगे सब हॉस्पिटल्स में कि भाई आपके यहाँ पे ये 2 महीने में कितने बर्थ हुए, बर्थ सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा. बाद में क्रेमेटोरियम में फोन करें कितने लोग मरे, तो बर्थ वाले ऐड, डेथ वाले सब ऐड, राइट. तो भी परफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि जब वो टोटल मार रहा है ना तो भी 400 लोग मर रहे हैं और 300 लोग पैदा हो रहे हैं. मतलब ये हमेशा एक राउंड फिगर होता है. जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो उसमें कभी भी है ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलते कि आपके व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स 97,842 होने चाहिए. वो एक सैंपल स्पेस होता है 80,000 to 1,50,000. अगर ये कम हो गया या तो बहुत ज्यादा हो गया तो तकलीफ. आपके ब्लड प्रेशर का एक रेंज होता है 80 to 120. कभी ऐसे सुना 97.3 होना चाहिए. हाँ, जस्ट बिकॉज तेरा बर्थडे है 97.3 है, तेरा ब्लड प्रेशर ही होना चाहिए. इट इज ऑलवेज अ रेंज. 80 के नीचे गया या तो 120 के ऊपर गया, दैट मींस योर बॉडी इज गोइंग टू फेस सम प्रॉब्लम्स. लॉजिक समझा, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट मीन वेलोसिटी, व्हाट इज मीन वेलोसिटी? इट इज c1 प्लस c1 plus c2 plus dot 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 plus cn upon n. This is called mean velocity. And the unit is meter per second. Can I say it may be 0? हो सकता है ना? 3 मॉलिक्यूल्स है, एक का वेलोसिटी 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का -3 है. 1 plus 2 plus -3 upon 3 is 0. हो सकता है. Maybe 0. Can I say should not be? Why should not be? Because it is contradiction. आप बोल रहे हो kinetic energy directly proportional to absolute temperature. अगर ये 0 हो गया मतलब kinetic energy 0 हो गया, मतलब temperature 0 हो गया. Lovely, you have achieved absolute 0. Not lovely, you have not. मतलब ये contradiction था. Should not be 0. तो उसके लिए क्या किया? स्क्वायर किया. c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस ब्ला 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 प्लस cn स्क्वायर अपॉन n. सो दिस इज कॉल्ड c बार स्क्वायर, मीन स्क्वायर, राइट? वी आर आउट ऑफ प्रॉब्लम, वी आर आउट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, राइट? कैन आई से ओ लवली? बट देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. Oh, yes or no? So how to come out of this problem? C bar square का root is C R.M.S is ऊपर वाला फॉर्मूला C1 square plus C2 square plus blah 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 plus Cn square upon n का root. We are back to meter per second. So most important, can the mean velocity and root mean square velocity be the same? Unit wise, yes. Dimension wise, yes. Value wise, never. Never. चेक करते हैं. मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स है. चलो ना नेगेटिव नंबर लेते ही नहीं. एक का स्पीड 1 है, एक का स्पीड 2 है, एक का स्पीड 3 है. मीन वेलोसिटी बोलो. 1 plus 2 plus 3 upon 3. My answer is 2. अभी रूट मीन स्क्वायर सोचो. 1 square plus 2 square plus 3 square upon 3 under root. 9 plus 4 13 plus 1 14 upon 3 under root. Yes or no? It means 4 point something का रूट आएगा. 9 plus क्या क्या बोला मैंने? 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 3 का स्क्वायर. 14 upon 3 is 4.66 का रूट. My answer will be 2 point something. मेरा मीन वेलोसिटी का आंसर 2 आया था, लेकिन मेरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आंसर 2 point something आया. So can mean velocity and root mean square velocity ever be the same? No. Never be the same. अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है भाई?
व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो है ना, ऑल द डिवाइसेस, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, प्रोजेक्टर, एवरीथिंग, दे आर वर्किंग ऑन 230 वोल्ट्स, एसी 50 हर्ट्ज। अब कोई भी डिवाइस देखोगे ना, उसमें ये सिंबल मिलेगा। अगर आप अब्रॉड जाते हो, वहां पे लिखा होगा 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, दिस इज अर्थिंग, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज लाइट, या तो दिस इज लाइट, दिस इज न्यूट्रल। यस और आप यहाँ पे जो भी डिवाइस कनेक्ट करते हो, दैट इज वर्किंग ऑन एसी। एसी का मतलब इट फॉलोज साइन वेव। आपके घर में जो ईएमएफ यूज होता है, इट इज फॉलोइंग द रूल E0 साइन ओमेगा टी। E0 का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू, इससे ज्यादा आंसर नहीं हो सकता। अब ये साइन फंक्शन क्या रोल प्ले करता है, ध्यान से सुनो। यहां पे मैं लिखता हूं E, ये अगर आपको ओमेगा टी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, नो प्रॉब्लम, लिखता हूं थीटा। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? यहां पे मैं थीटा के वैल्यूज ले रहा हूं, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Right? So what will be sine theta? 0, half, 0.866, 1, 0.866, half, 0, minus half, minus 0.866, minus 1, minus 0.866, minus half, 0. अब आप ये सारे नंबर्स ऐड करो, सारे, और एवरेज ले लो, पक्का 0 आंसर है, पक्का। क्योंकि मेरे पास जितने पॉजिटिव वैल्यूज है उतने ही नेगेटिव वैल्यूज है, जितने पॉजिटिव वैल्यूज है उतने ही नेगेटिव वैल्यूज है, राइट? 50 हर्ट्ज का मतलब होता है एस से 50 वेव्स एक सेकंड में खत्म हो रहे हैं। दैट मींस दिस इज 5 times faster than what your brain understands. Your brain understands 1/10 of a second. This is time. That means frequency is 10 and this is 50. So by the time you feel कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, आपको 5 बार लग गया। और एसी का फायदा ये है, फायदा इसलिए बोल रहा हूँ कि मरोगे, एसी विल थ्रो यू अवे, बिकॉज इन दिस 150 हर्ट्ज का साइकिल इट बिकम्स 0 100 टाइम्स। तो जब ये 0 था ना, इट विल, जब आप गलती से सॉकेट को टच, आपको झटका लगेगा। अगर ये डीसी होगा ना, चिपक जाओ। आपको कोई बचाने आया तो वो भी चिपक, आप दोनों को कोई बचाना तो वो भी चिपक। दैट इज व्हाई एसी। अभी आर्ग्यूमेंट सुनो, मैं गवर्नमेंट को आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं कि सर, पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइसेस यूज्ड बाय मी इज वोल्टेज इनटू करंट, मतलब ईएमएफ इनटू करंट। लेकिन सर एवरेज जो ईएमएफ मैंने यूज किया है वो तो 0 है सर। अच्छा सर, करंट का भी सेम साइकिल है, बिकॉज करंट आल्सो इज I नॉट साइन थीटा। तो सर ये भी 0 है, तो आई एम कंज्यूमिंग 0 पावर, देन व्हाई द बिल? गवर्नमेंट इज नॉट फूल। ये प्रॉब्लम हमेशा तब आता है when there are equal and opposite pairs, 1 2 -1 -2। अब ये मेरे पास जितने पॉजिटिव साइकिल्स है उतने नेगेटिव वैल्यूज है। गवर्नमेंट बोलता है बेटा रुक जा, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू लाइक दिस, वी आर गोइंग टू चार्ज यू लाइक दिस। मतलब E square is E0 square sin square theta, I square is I0 square sin square theta, राइट? तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, 0 0.25 जो भी है, दिस इज हाफ, तो 1/4। तो अब ये जो वैल्यूज है वो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, मेरा आंसर 0 आएगा। अगर मैं ये फंक्शन लेता, साइन फंक्शन, तो व्हाट द एवरेज? 0। अच्छा, एवरेज गिनने का एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। व्हाट इज इट? मिनिमम। ये पूरे साइकिल में मिनिमम किधर है? -1 के नीचे कोई भी नंबर, मैक्सिमम किधर है? तो व्हाट इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2? 0। Therefore my argument to the government was, sir, 0, right? गवर्नमेंट बोलती है रुक जा बेटा, 0 1 0, देख तेरा बिल आएगा अभी, ये 1 हो गया। तो now what is the average? 1 minimum is 0, maximum is 1,
तो 0 + 1 अपॉन 2, यस और नो? मैं बोलूंगा सर ये तो स्क्वायर हो गया। कोई बात नहीं बेटा, अभी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आर यू गेटिंग दिस? सो व्हेनेवर यू आर स्टक अप लाइक दिस, टेक द स्क्वायर एंड देन टेक द स्क्वायर रूट। मतलब आपके घर में जो बिल आता है ना, वो साइन फंक्शन पे नहीं है, साइन स्क्वायर फंक्शन को स्क्वायर रूट लेके, राइट? आपके घर में जो ईएमएफ यूज होता है, करंट यूज होता है, इट इज एसी साइकिल। पहले अपने लोकल ट्रेन्स डीसी पे चलते थे, अब वो एसी पे चलते, 25,000 वोल्ट एसी, राइट? तो वो भी झटका देके आपको फेंकेगा, बट वो 25,000 वोल्ट मार देगा। ये सिर्फ 230 वोल्ट, राइट? और वो 25,000 वोल्ट है। आप कोई भी बिल्डिंग के बाहर निकलोगे ना, मोस्टली हर एक बिल्डिंग के बाहर एक रेड जंक्शन बॉक्स, इसमें ऐसा खोपड़ी का निशान बना है, नयन सर का फेवरेट, और इसमें लिखा होगा 440 वोल्ट्स, डेंजर, बिकॉज ये वोल्टेज एक तो डीसी है, मतलब बहुत पावरफुल वोल्टेज है, इट कैन किल यू इफ यू कम इन कांटेक्ट विद द लाइव वायर, राइट? लाइटनिंग जब होता है और बाय चांस वो बिजली किसी पे गिर गया, ऑन द स्पॉट डेथ, बिकॉज इट इज अबाउट 1 मिलियन वोल्ट। इज दैट क्लियर? समझा अच्छे से? आरएमएस का यूज क्या है समझा? दिस इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट फिजिक्स, राइट? व्हाट डज दिस मीन? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25. Very good. And therefore what is square root of 25? 5. Very cute, perfect. What is 5 ka square? 25. And therefore what is 25 ka root? 5. Answer is no. It is plus minus 5. So this is the beauty of science. A layman says square root of 25 is 5. Science student says sorry, plus minus 5. तो ये पंगा किसकी वजह से हो रहा था? वो माइनस नंबर्स की वजह से। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस लेना पड़ता है। दैट इज व्हाई कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस इज नेसेसरी। अभी तक मैंने जो भी बोला सब समझा? सुपर श्योर? पेज नंबर 7। The definitions A, B and C. The definition A, B and C. आगे सुनो, एक छोटा सा पॉइंट, एकदम छोटा सा पॉइंट। Do you agree with me? This is 3-dimensional rectangular box to understand vectors. Yes. X-axis, Y-axis, Z-axis. If the gas molecule moves only along X-axis, only, then its velocity component is called u vector. If it is moving only along y-axis, v vector. If it is moving only along z-axis, w vector. If it is moving in xy plane, then vector u plus vector v. yz plane, vector v plus vector w. xz plane, vector v plus vector w. u plus w. If it moves in space, 3 dimension, then its velocity is taken as c. बराबर? C वेक्टर is U वेक्टर प्लस V वेक्टर प्लस W वेक्टर। तो मैंने इधर जो C लिया था ना, वो 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल मूव हो रहा था। If I take U only along x-axis, V only along y-axis, W only along z, root of U square plus V square, xy plane, root of V square plus W square, इसका मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं बेटा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो मेरे पास इधर कितने आंसर्स पॉसिबल है? 7। ओनली यू, ओनली वी, ओनली डब्ल्यू, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, द मॉलिक्यूल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, रूट ऑफ दिस टू वाई जेड, रूट ऑफ दिस टू, ऑल 3। समझा? So what is the meaning of u? X component of velocity. अगर मुझे इसको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। सोचो बेटा, u times I, v times j, w times k. This is c vector. And then you say magnitude of a vector is square root of sum of squares of components. Yes or no?
That means if the x component is 1 meter per second, y component is 2 meters per second, z component is 3 meters per second, is my overall answer 6 or no? And if no, then what is the answer? U is 1, V is 2, W is 3. Is my answer 1 plus 2 plus 3? Because you are doing it algebraically. You are wrong. It should have been this. Root of 1 square plus 2 square plus 3 square. That means my answer is root 14. The molecule is moving with the speed root 14, not 6. समझा? Page number 7. Definitions A, B and C. उधर एकदम लास्ट में जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, उसको बॉक्स में डाल दो और बोलो एकदम लास्ट वाला, यस, रूट ऑफ 3 RT अपॉन एन, उसको बॉक्स में डालो बेटा और बोलो प्रूफ ऑन पेज नंबर, प्रूफ ऑन पेज नंबर 16. आई एम नॉट वेरी श्योर, विल यू प्लीज कंफर्म दैट? प्रूफ ऑन पेज नंबर 16 का जरा मिडल का कोई फॉर्मूला देखो. पेज नंबर 16 का सेकेंड नंबर का फॉर्मूला देखो. इज इट रूट ऑफ 3 RT बाय एन? कम बैक प्लीज, कम बैक. इज इट द सेम फॉर्मूला? ओके, तो फिलहाल ये फॉर्मूला मत पढ़ना, खाली सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ो. मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तीनों डेफिनेशंस हो गया. Because now I am going to do extraordinarily important derivation, that is, what is the pressure exerted by a gas? What is the pressure exerted by a gas? थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है बेटा, ध्यान से. As per your book, it is about 3.5 pages. It's okay, you are grown-up kids now. It's okay, डरने का क्या? There are derivations which are 6 to 7 pages also. Shut up. Expression for pressure exerted by a gas. Expression for pressure exerted by a gas. As I told you, super duper favorite article, board exam point of view, right? Obviously NEET point of view and the objective exam point of view, the end results, but board exam point of view, this article comes. Total focus on the board, books एकदम बंद. मैं एकदम स्लो जाऊंगा, आप लोगों ने सिर्फ मुझे बोलते जाना है कि स्टेप्स समझा कि नहीं, and thereafter I will give you time to go through the notes. Normally we take DCTs only and only on objectives, but if I feel that a particular derivation is lengthy, difficult for the student to remember, then exceptionally once in a blue moon I will take DCT on that also. This is that article. Suppose I am giving you a cubical container. Let us assume this classroom is cubical.
this is x axis, this is y axis, and this is z axis. This is the meeting point of all, say O. Right? I am filling this container with some gas, say oxygen or say nitrogen or whatever. Right? Over here, m, small m, will be mass of each molecule. बेटा ये चैप्टर में 3 m आएंगे. One is small m, other is big M, which we call it m dash, mass of the gas, and the third one will be molecular weight. So m is mass of each molecule. N is number of molecules given to you. Number of molecules. So what is the total mass of the gas? Is it mass of one molecule into number of molecules? Is it mass of the gas? Yes or no? I have told you that I am giving you cubical container. इसका मतलब length of this container is L, breadth of this container also is L, and width of the container also is L. So what is the volume of this container? L cube. Volume of this container is L cube. Yes or no? And whatever is the volume of the container, by default becomes the volume of the gas. Because gas molecules are free to move. Mind you, solids have definite shape and volume. Liquids have only definite volume, no definite shape. They take the shape of the container. Gases neither have definite shape nor definite volume. तो हम लोग जब volume of the gas बोलते हैं, it is the volume available for the gas molecules to move. ये पूरे क्लासरूम का गैस, सपोज इसमें वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करके मैंने ये बॉटल में भर दिया तो दैट इज द वॉल्यूम अवेलेबल, राइट? अगर उसको शिफ्ट करके ये बॉटल में शिफ्ट किया तो वॉल्यूम इज रिड्यूसिंग, वॉल्यूम अवेलेबल इज रिड्यूसिंग. सो कैन यू से डेंसिटी इज इंक्रीजिंग. Yes. मेरे पास मास ऑफ द गैस है, राइट? आई वुड लाइक टू कॉल दिस एज एम डैश, और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस भी है. तो व्हाट विल आई गेट एज डेंसिटी? डेंसिटी इज द mass upon volume. So I get the first mathematical result, and that is density of the gas, rho. Density of the gas, rho, is mass of the gas upon volume available for the gas molecules to move. So that is volume of the gas. That means density is equal to m into n upon L cube. सोचो, m into n upon L cube. Yes or no? अभी मैं एक ही मॉलिक्यूल लूंगा, एक ही डायरेक्शन लूंगा, और पहले उसका प्रेशर ढूंढूंगा, and then I will extend my knowledge to all directions, all molecules. I will start with one single molecule. I will take one direction, only x या तो only y या तो only z, and thereafter I will extend my answer to all directions, all molecules. So suppose I am taking a single molecule, and that single molecule starts moving from this wall, and it goes to the opposite wall, and it goes to the opposite wall. It collides with that wall, and then because we know that the collisions are perfectly elastic, that molecule bounces back, comes back. So if I am taking a molecule of mass छोटा m, this molecule is moving with velocity u along x direction, because x component is u, y component is v, and z component is w. तो मैंने तो x direction लिया है ना खाली, इसलिए मैं ये u ले रहा हूं. Because this is one molecule, molecule number 1, इसको मैं बोलूंगा u1. ये molecule इधर टकराया और रिटर्न हुआ, रिटर्न, तो इसका मास अभी भी सेम है, राइट? लेकिन इसका वेलोसिटी हो जाएगा माइनस u1. बराबर ना? अच्छा, क्यों माइनस u1? u2 क्यों नहीं? बिकॉज u2 इज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 2. v क्यों नहीं? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं u is the initial velocity, v is the final velocity. v is reserved for somebody else. v is reserved for y component. ये x पे गया, टकराया, वापिस आ गया. यस और नो? अभी आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए? कोई भी बड़ा डेरिवेशन याद रखना है
तो उल्टा सोचने का कि आपको क्या चाहिए, एंड रिजल्ट क्या चाहिए. What end result do you want? प्रेशर. अब स्कूल लेवल नॉलेज याद करो बेटा. प्रेशर ढूंढने के लिए क्या चाहिए? आई एम सो प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड. यू नीड फोर्स अपॉन एरिया. तो बेटा इसमें एरिया तो आसान है. एरिया ऑफ ऑल द वॉल्स इज एल स्क्वायर. बिकॉज मैंने क्यूबिकल कंटेनर दिया हुआ है. यस और नो? क्यूबिकल कंटेनर दिया हुआ है. दैट मींस ऑल द वॉल्स आर स्क्वायर. तो एरिया इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. राइट? व्हाट डू यू नो अबाउट फोर्स? मास इनटू एक्सीलरेशन. दूसरा वाला सोचो बेटा, ये लिख सकता हूं मैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन, आप लोगों ने जो बोला था वही है ये. आप लोगों ने बोला मास इनटू एक्सीलरेशन. चलो मैं मास इनटू एक्सीलरेशन लिखता हूं. नो वरीज. फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन. Acceleration is change in velocity for the corresponding change in time. Mass and change in velocity is change in momentum upon change in time. इसका मतलब मुझे दो चीजों के लिए ट्राई करना चाहिए. One is change in momentum and other is time. क्योंकि एरिया तो मुझे पता है. थॉट प्रोसेस समझा बेटा? थॉट प्रोसेस समझा. आपको क्या चाहिए एंड रिजल्ट, उसके बारे में सोचो और उल्टा सोचो. आपको प्रेशर चाहिए, मतलब फोर्स अपॉन एरिया चाहिए. एरिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब फोर्स चाहिए. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force and takes place in the direction of the force. पूरा स्टोरी समझा? अब ध्यान से बेटा, what is the initial momentum of this molecule? आराम से. What is the initial momentum of the molecule? Do you agree with me? It is P initial and it is mu1. क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. Right? What about final momentum of the same molecule? I am so proud of you. Perfect. Therefore, what is change in momentum? Change in momentum of this molecule. Should it be delta P? Should it be final momentum minus initial momentum? Therefore, delta P should be minus mu1 minus mu1. Yes or no? So is it minus 2 mu1 बराबर, ये मुझे मिला चेंज इन मोमेंटम, मतलब ये मिला ये. Let me just call this as equation number 2. Let me just call this as equation number 2. यहां तक समझा बेटा? अभी टाइम, mind you, time is a scalar. Time is a scalar. What is the meaning of time? Is it distance upon speed? Time is distance upon speed. Yes or no? मॉलिक्यूल कैसे जा रहा है? वॉल नंबर 1 से शुरू हुआ, वॉल नंबर 2 पे जाके टकराया, वॉल नंबर 1 पे वापस आया. Going, coming back. So can I say distance while going is L? Distance while coming back also is L upon U1. Mind you, this time minus plus is not important for me. Why? I am calculating time, and time is a scalar. So speed of the particle is u1. Please let me know. समझा? So what is the formula for time? Is it 2L upon u1? Let me call this as equation number 3. Yes or no? What am I looking for? Rate of change of momentum. What am I looking for? Rate of change of momentum. So can I say, using equations 2 and 3, using equations 2 and 3, will I get change in momentum upon corresponding change in time is minus 2 mu1 upon 2L upon U1. Yes or no? 2 to 2 पर ऊपर. This is what? Rate of change of momentum. Rate of change of momentum.
ऑफ विच मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल नंबर 1. समझा ये? क्या आंसर आया मेरा? -mu1 अपॉन L. बस यहां पे थोड़ा सा कैच है, सोच के बोलना बेटा. बाय डेफिनेशन दिस इज फोर्स. बाय डेफिनेशन या तो आई कैन से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये फोर्स हो गया बराबर. बट व्हाट इज दिस? फोर्स एक्सर्टेड. सोच के बोलना प्लीज. जब मैं बोलता हूं सोच के बोलना, थोड़ा टाइम लेके बोलने का, सोच के बोलने का. फोर्स एक्सर्टेड बाय whom? On whom? आराम से. It is by the molecule on the wall कि by the wall on the molecule? By the wall on the wall. Very good. You know why? ये मॉलिक्यूल वॉल की वजह से वापस आया. मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो रिजिड वॉल की वजह से हुआ. राइट? मॉलिक्यूल की वजह से वॉल नहीं शिफ्ट हुआ है, वॉल की वजह से मॉलिक्यूल शिफ्ट हुआ है. वेरी गुड, परफेक्ट. So this is by the wall on the molecule. समझा बेटा? Right? So what is force exerted by the wall on the molecule? -mu1 square by L. लेकिन मुझे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस चाहिए, मतलब बाय द गैस मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब मुझे ये उल्टा चाहिए. I can use Newton's third law. To every action there is an equal and opposite. So can I say according to Newton's third law? बराबर. अब मैं ये सेंटेंस उल्टा लिखूंगा. So will I say force exerted by the on the. Very good. This is by the molecule on the wall is equal to plus mu1 square upon L. अभी मुझे इसको कोई सिंबल देना है. ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ना, मुझे इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, मुझे इसको सिंबल देना है. सो डोंट यू थिंक दिस इज Fx1. सोचो बेटा. दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल नंबर 1, क्योंकि एक ही लिया है मैंने, अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि मैंने वेलोसिटी u लिया है. अगर मैं वेलोसिटी v लेता तो इधर Fy1 लिखता. अगर मैं इधर वेलोसिटी w लेता, मुझे कोई भी एक डायरेक्शन लेना है और कोई भी एक मॉलिक्यूल लेना है. फाइनली am I successful in getting Fx1? What is Fx1? Plus mu1 square upon n. What is Fx2? Plus mu2 square upon n. What is Fxn? mun square upon n. So what is the total force? Total average नहीं लिख रहा हूं मैं, total लिख रहा हूं. What is the total force exerted by n molecules along x direction? चलो बेटा बोलो. Fx, ये सबका टोटल, एवरेज नहीं लेना है, टोटल. So is it Fx1 plus Fx2 plus blah 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 plus Fxn? So can I say the total force exerted along x-axis is mu1 square upon L plus mu2 square upon L plus blah 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 plus mun square upon L. I can take m by L common. So what will be Fx? M upon L common. u1 square plus u2 square plus blah 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 plus un square. मुझे प्रेशर चाहिए. So what is pressure along x direction? What is pressure along x direction? Is it force along x direction upon area? So is it force along x direction upon length square? So can I write this directly? सोच के बोलो बेटा. m upon L cube. m upon L already था, upon L square आया.
Is it m upon L cube? u1 square plus u2 square plus blah 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 plus un square. तो ये मुझे क्या मिला? Pressure exerted by the gas molecules along x direction. Illy. Pressure along y. Come on, make me feel proud. Should it be m upon L cube? v1 square plus v2 square plus blah 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 was nice. समझा बेटा? Right? Lily Pili, I mean Lily. PZ is it m upon L cube times w1 square plus w2 square plus blah 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 plus wn square. Obedient children, no? So therefore, what is the average pressure? अभी मैं word use कर रहा हूँ average. What is the average pressure exerted by all the gas molecules in all the directions? Upon 3. अब ध्यान से सुनो मैं क्या लिखूं. Can I say therefore P is equal to m upon L cube, m upon L cube, m upon L cube common. अंदर क्या आएगा? u1 square plus u2 square plus blah 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 plus u1 square plus v1 square plus v2 square plus blah 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 plus vn square plus w1 square plus w2 square plus blah 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 plus wn square. नहीं लिखना है मुझे. What is u1 square plus v1 square plus w1 square? Very good. c1 square. What is u2 square plus v2 square plus v2 square? And बराबर. डर के आगे जीत है. ये लंबा चौड़ा गाना समझ एकदम मस्त आएगा. Is it therefore c1 square plus c2 square plus blah 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 plus cn square upon 3. Yes. बराबर है बेटा, बराबर है. इसका m upon L cube मैंने लिया था, तो ये 3 लेना था मुझे. इसको ध्यान से देखो, इसको. Is it not NC square? Is it not NC square? Prove करता हूं. C bar square is C1 square plus C2 square plus blah 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 plus Cn square upon n. Therefore, C bar square is C1 square plus C2 square plus blah 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 Cn square upon n. तो ये n मैंने shift किया. Yes or no? Let me call this as equation 4. So can I say using equation 4? Using equation 4. Can I say therefore? Oh lovely. Here I am. जिसको मैंने हाईलाइट किया mm upon L cube, is it rho? mn upon L cube, is it rho? And therefore I get the final hero of the story. And that final hero is P is 1/3 rho c square. 1/3 rho c square, and this is what is अच्छे से हुआ उसके. हाँ, इसका एंड है. कैसा? नीट पॉइंट ऑफ व्यू. नीट पॉइंट ऑफ व्यू. Mind you, this kind of things happen every year. We see at least 15 to 20 students in India, at least, जिनका स्कोर 650 प्लस आता है और बोर्ड एग्जाम में 41%, 37%. That means you don't qualify. The reason PCB has to be 50%. PCB 50% plus. Is that clear? क्योंकि हम लोगों को थ्रू आउट 2 साल
ऑब्जेक्टिव करने की आदत है। अब जब आप जून से लेके नेक्स्ट दिसंबर तक 18 महीने तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते हो, अचानक से बोला चलो बेटा अभी बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस करना है आपने को, ऐसे 5 में से 3 डेरिवेशन लिखने हैं एक्चुअली। ये डेरिवेशन 4 मार्क का है एंड आउट ऑफ 5 यू राइट एनी 3। एक स्टेप लिखते लिखते हाथ कांपता है कि सर आगे क्या लिखने, बराबर ना। तुम लोग जब एमसीक्यूज में वर्किंग स्पेस में कैलकुलेशन करते हो, कौन देखने आता है क्या कैलकुलेशन, कौन पूछने आता है कैसे किया, कितना फास्ट है। हम लोग तो सिर्फ बबल लिखते हैं, 1 का आंसर सी है, राइट है, 4 मार्क्स, रॉन्ग है, -1, खत्म। इज दैट क्लियर? इधर कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। डेरिवेशन मतलब 2-3 पेज भर के होता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। समझा बेटा? सुपर श्योर? सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस is decided by the speed. Greater the speed, greater the pressure. Hydrogen, oxygen, nitrogen, helium. Which is the lightest gas? So moves the fastest. Exerts tremendous pressure. So hydrogen is explosive. Balloons में हम लोग हाइड्रोजन नहीं भरते, लेकिन हम लोग जब हॉट एयर बलून की राइड लेने जाते हैं तो ग्रेविटी को चैलेंज करके ऊपर जाना है, तो दैट टाइम वी यूज हाइड्रोजन। यस और नो? बट दे कीप अ वेरी डाइल्यूट लेवल, क्योंकि ऊपर थोड़ा भी इधर उधर विंड फैक्टर की वजह से वो बलून के मेम्ब्रेन को आग ने टच कर दिया, देन इट्स अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। आर यू गेटिंग दिस? समझा अच्छे से? पेज नंबर 10 अप टू 30 इज द डेरिवेशन। पेज नंबर 10 उधर जो डायग्राम है उसके ऊपर जो टाइटल है उसको 10 स्टार मार्क करो। टाइटल के बाजू में 10 स्टार मार्क करो और बोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी डीसीटी ले रहा हूँ पूरा, ऑफ कोर्स। इसमें क्या, इसमें भी बार्गेनिंग, फीमेल मेंटालिटी। हाँ ऑफ कोर्स पूरा मार्क्स चाहिए कि थोड़ा चलेगा? एक आध मार्क्स चाहिए तो इतना लिखो, एक और चाहिए तो ये भी लिखो, एक और चाहिए तो ये भी लिखो। अरे राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए ना अपने को। मैं इसकी फोटो लूंगा, ग्रुप पे नहीं भेजूंगा। Some parents feel कि my child is एक बात बता, मैं क्या तुम लोगों को ग्रुप पे टाइम पास मैसेज भेजता हूँ? जैसे कृष्ण जय जितेंद्र। अब ये पेरेंट बोलता है नहीं सर, एक बार जो आप बोलते हैं स्मार्टफोन यूज नहीं करने का, फिर आप ये पीडीएफ भेजते हो। मैं कौन सा स्टूडेंट के फोन पे भेज रहा हूँ? आपके डैडी और मम्मी जब मेरा पीडीएफ ओपन करेंगे, सिर्फ एक प्रिंट आउट देना है आपको। अभी डैडी आपको क्या, नहीं सर मेरा बच्चा फिर मेरा मोबाइल फोन लेके बैठता है, तो वो थोड़ा रिस्की है ना, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। मैं किधर बोलता हूँ आप अपना मोबाइल फोन दो अपने बच्चे को, मत दो। जाओ जेरोक्स सेंटर में जाकर खाली प्रिंट आउट दे दो, मैं इसकी फोटो लूंगा, भेजूंगा। मैं मेरे असिस्टेंट को भेजूंगा, जिसको फोटो चाहिए उसको। चलो 3, 2, 1। नहीं मुझे सच्ची में बहुत सरप्राइज होता है यार कि आई एम सेंडिंग दिस फॉर अ नोबल कॉज। तुम लोग 4 पेज पढ़ो और ये 1 पेज पढ़ो, कौन सा ज्यादा इजी है? एनी टाइम ठीक है। नहीं मैं आईपैड नोट्स भी नहीं देने आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग आईपैड नोट्स। तुम लोगों की वजह से सुनना पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग स्मार्टफोन यूज करते हो। चलो 3, 2, 1 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पेज नंबर 10 से शुरू करो, पेज नंबर 13 पे खत्म करो। Anyways, this was the last topic of the day, so I will stop the recording here at least.